Hello student, today we are going to start a new point in states of matter topic. Types of interaction, third type, dipole induced dipole interaction. We see a types of interaction, third point, dipole induced dipole interaction. So in last lecture we see what is dipole molecule. So dipole means two opposite pole. Dipole means two opposite pole. So in this dipole molecule means polar molecule. Dipole molecule means polar molecule. So we see a difference between polar and non-polar. Polar and non-polar in last lecture. In last lecture we see a difference between polar, non-polar and first type of interaction, dipole-dipole interaction. Second type of interaction, ion-dipole interaction we see in last lecture. So in this lecture we discuss a dipole-induced dipole interaction. So when a polar molecule like H2O, NH3, we see a polar molecule. Polar molecule means electron cloud do not coincide at some point. So polar molecule, example we taken as water molecule or ammonia molecule. So ammonia chemical or molecular formula NH3. So this is a polar molecule. And non-polar molecule like benzene approach each other, and non-polar molecule so non-polar molecule we consider as benzene. So benzene molecular formula C6H6. So when polar molecule and non-polar molecule are approaches with each other, means are approaches with each other, means polar molecule are come close contact with non-polar molecule. So reaction means a polar molecule we consider as ammonia molecule. So ammonia formula is NH3. So in this ammonia we draw a structure means like this, N and 3H. So we draw a structure like this. So polar molecule so do not coincide a electron cloud between nitrogen and hydrogen. So this is we call as polar molecule. So polar molecule, nitrogen has lone pair. So we denoted as 2 dot, means nitrogen atomic number Z, which is equal to 7. So electronic configuration we write like this, 2 and 5, means first shell 2 and outermost shell 5 electron. So this 5 electron. So valency of nitrogen. So how to calculate the valency? So valency in last outermost shell only 5 electron. So it is not stable electronic configuration. जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के लिए लास्ट शेल, जो लास्ट आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, उसे लास्ट शेल को आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, सो डबलेट मतलब जो लोअर एटॉमिक नंबर मतलब हेलियम का ही डबलेट कंप्लीट होना चाहिए हाइड्रोजन, और लार्जर एटॉमिक नंबर लास्ट शेल में ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन जरूर. तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वैलेंसी इंक्रीजेस 1 to 4 एंड देन अगेन डिक्रीजेस 4 to 0. तो यहाँ पे क्या है, ये 5 नंबर है, तो यहाँ पे मैंने 8 minus 5 कर दिए, तो इज इक्वल टू 3. तो 3 क्या आ गए, मतलब वैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, मीन्स नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय एलिमेंट. तो यहाँ पे 3, तो नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड फॉर्म कर दिए, 3. और यहाँ पे 5 minus 3 मतलब आउटर मोस्ट शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस वैलेंसी कर दी, तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 2. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिए. तो उसे हम क्या करते हैं, non bonding electron मतलब lone pair of that electron. So we denoted as 2 dot. So this is ammonia molecule. So hydrogen, due to polarization, it gains a delta positive charge. This hydrogen also delta positive charge, and this hydrogen also delta positive. And due to this delta positive, nitrogen
hydrogen acquire a del negative charge. So these polar molecules are come close contact with non-polar molecule, means C6. That's it. So this is a polar molecule and this is a non-polar molecule. So polar and non-polar molecule are develop a temporary force of interaction. Develop a temporary force of interaction like this. Means develop a temporary dipole induced dipole interaction, means force of attraction between polar and non-polar. Between polar and non-polar. Between polar and non-polar. So these are carbon as delta positive and this hydrogen as delta negative. So we confuse about this hydrogen is delta positive but this hydrogen is delta negative. So हाइड्रोजन मीन्स एम्फोटेरिक इन नेचर है तो वो कुछ रिएक्शन में एसिड भी एक्ट करता है, बेस भी एक्ट कर सकता है. तो यहाँ पे मैंने डेल्टा नेगेटिव इसलिए लिखा है ड्यू टू पोलराइजेशन. तो यहाँ पे पोलर और नॉन पोलर में टेम्पररी ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये टेम्पररी डेवलप हो गया. टेम्पररी डेवलप a force of attraction. A force of attraction between polar and non-polar molecule. Temporary dipole between polar and non-polar molecule. So this interaction we say that dipole induced. Induced का meaning क्या होता है? To temporary charge, temporary force of interaction. So this interaction we say that dipole induced dipole interaction. So induced का मीनिंग क्या होगा? टेम्पररी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है उसे हम इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं, मतलब डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन. सो hence temporary dipole are formed by shifting of electron cloud in non-polar molecule. By example, ammonia is a polar, has permanent dipole moment. जो पोलर है तो वो पोलर क्या परमानेंट डायपोल मूवमेंट शो करता है. सो polar molecule shows a permanent dipole moment. Permanent dipole moment shows, and benzene is a non-polar. So and has a zero dipole moment. जो benzene है non-polar, so it shows a zero dipole moment. Zero dipole moment. Means we see what is dipole moment, means product of charge and separation distance between, means product of charge जो होता है Q into जितना distance होता है उससे हम dipole moment निकालें. तो polar का कितना होता है? नॉन जीरो dipole moment मतलब permanent dipole और non polar का zero dipole moment. The force of attraction developed between polar and non polar molecule is the one of the type of dipole induced dipole interaction. So this is a dipole induced dipole interaction. मतलब यहाँ पे मैंने अमोनिया एग्जाम्पल, तो मतलब अदर एग्जाम्पल भी कंसिडर एज अ पोलर एग्जाम्पल. सो a force of interaction means temporary force of interaction developed between polar and non-polar molecule. So this is we called as dipole induced dipole interaction. So this is a third type of interaction, dipole induced dipole interaction. So four types of interaction we see. Four types: London dispersion force. So London force, which is also called as dispersion force, and this force also alternative name means van der Waal force. This force also an alternative name van der Waals force. So London dispersion force. Intermolecular forces are present among between the non-polar molecule or the individual atoms of a noble gas. So noble gases means chemically inert element, means non-reactive element.
Inert means non-reactive element. So noble gases and non-polar molecule shows London dispersion force. So in case of non-polar molecule and inert gases, only dispersion force exists. So noble gases means 18 group element, helium, neon, argon, krypton. So this element we called as noble gases means inert group element means 0 group element. So this non-polar or inert gas means helium, neon, argon, krypton. Only dispersion force exists. So dispersion force we also called as London force due to idea of momentary dipole. Due to idea of momentary dipole. So this was proposed by German physicist Fritz London. So this idea of momentary dipole was proposed a German physicist scientist Fritz London. The scientist name Fritz London in 1930. In 1930, developed means proposed a momentary dipole between non-polar molecule or inert gases element. So these forces we also called as van der Waals force. These forces we also called as van der Waals force, and it is a weakest intermolecular force. So important point in London dispersion force, it is a weakest force in intermolecular interaction or intermolecular force developed due to interaction between two non-polar molecules. In general, all atoms and molecular experience London dispersion forces which result from motion of electron. Next new point, this London force और डिस्पर्शन फोर्स आइडिया ऑफ मोमेंटरी डायपोल मीन्स ये क्या होता है, जो एलिमेंट हम एग्जांपल कंसीडर करने वाले नॉन पोलर और इनर गैस, ये क्या शो करते हैं पोलराइजेशन. ये पोलराइजेशन क्यों होगा, ये कंटिन्यूसली मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करेंगे. मोमेंटरी डायपोल मतलब क्या, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करेंगे, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो ये फर्स्ट मैंने एलिमेंट कंसीडर कर दिया, मतलब एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम. तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या शो करेगा, फिगर मतलब यहाँ पे इस डायरेक्शन से तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यहाँ पे होगी. नेक्स्ट में डायग्राम सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम ड्रॉ करती हूँ. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा जब मैं इस डायरेक्शन से शो कर दूँ तो. नेक्स्ट थर्ड डायग्राम, इलेक्ट्रॉन position in upper side when we show the motion of electron. Next, electron position like this, and last one is structure of atom, electron position like this. So at the instant, center of positive and negative charge do not coincide. So instead, atoms or molecule has non-zero dipole moment. So this non-zero dipole moment of non-polar molecule is instantaneous dipole moment. Means जो एटम रहता है तो यहाँ पे क्या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करता है, मतलब एट एनी इंस्टेंट. तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब दिस इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन एटम में अनसिमेट्रिकल, गिविंग एटम a short-lived atom can affect the electron distribution in neighboring atom and induce momentary dipole. So as a result, weak attractive forces develop. As a result, weak attractive forces develop. मतलब ये मैंने एक एटम, तो यहाँ पे एट इंस्टेंट टाइम पे जब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यहाँ पे होगी, एट मतलब सम टाइम पे इलेक्ट्रॉन पोजीशन मतलब ये कंटिन्यूसली चेंज होगा इंस्टेंट टाइम पे. मतलब मैंने फर्स्ट कंसीडर कर दी यहाँ पे, लेकिन मतलब कुछ सेकंड के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो गई, मतलब इंस्टेंट चेंज हो गई. तो इससे ही क्या, अभी यहाँ पे इस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, जब मैंने इस डायरेक्शन पे शो कर दिया तो इलेक्ट्रॉन मतलब इंस्टेंट में इलेक्ट्रॉन मोशन करता रहता है, इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन मोशन करता है. तो यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल मतलब एग्जाम्पल हमने O2 मॉलिक्यूल ले लिया, नहीं तो इनर गैस हेलियम नियॉन ले लिया. तो यहाँ पे क्या होगा, जो फोर्स क्रिएट होगा बिटवीन, यहाँ पे मैंने O2, तो यहाँ पे ये टेम्पररी मतलब इंस्टेंटेनियस
डायपोल मोमेंट जो क्रिएट होगा तो ये क्या होगा, लंडन फोर्स और डिस्पर्शन फोर्स, ये जो क्रिएट होगा इससे क्या बोलते हैं, लंडन फोर्स और डिस्पर्शन। और ये वीकेस्ट फोर्स क्यों कहते हैं, ये ड्यू टू दिस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस पोलराइजेशन ऑकर एट इंस्टेंटेनियस डायपोल मोमेंट, मतलब यहाँ पे इंस्टेंट मूवमेंट के लिए ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होती रहती है, तो ये फोर्स के लिए हम क्या कहते हैं, लंडन फोर्स और डिस्पर्शन फोर्स और वंडरवॉल फोर्सेस। सो London dispersion force which result from motion of electron at given instant of a time, मतलब given instant time पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, at given instant time इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये कंटिन्यूसली चेंज, so उसे ही हम instantaneous dipole movement कहते हैं। So this momentary dipole as one can affect the electron distribution of neighboring atoms, so this is a weak attractive force developed। तो यहाँ पे ये जो force होगा between atom नॉन पोलर मॉलिक्यूल और इनर गैस में, तो ये क्या होगा, जो वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, तो उसे ही हम लंडन फोर्स और डिस्पर्शन फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सब्सटेंस कंपोज ऑफ मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, N2, हेलोजन, मीथेन गैस एंड अदर नोबल गैसेस शोज वैन डर वाल फोर्सेस। सो वी राइट अ एग्जांपल ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस। एग्जांपल O2, CO2, N2, helium, methane means CH4, and inert gases, other inert gases shows a London force means weak force of interaction means van der Waals force of interaction. The strength of London force increases with increasing molecular structure, मतलब लास्ट जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था तो उसमें हमने मतलब उसका मोलिकुलर मास उसके डिपेंड था स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे भी क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल फोर्स इंक्रीजेस। सो नेक्स्ट वी पॉइंट राइट, स्ट्रेंथ ऑफ लंडन फोर्स डिपेंड अपॉन मॉलिकुलर मास means increases with increases with increase molecular size, molecular mass and number of electrons, molecular mass and number of electrons present in atoms or molecule, present in molecule or atoms. So this is London force or dispersion. So when two non-polar molecule approaches each other, attractive and repulsive force between the electron and nucleus will lead distortion in size of electron, so referred as polarizability means polarization is a measure distorted the electron cloud and atom, so applied electric field. So it is a property that means ability of another molecule to become molar. Redistribution of electron is known as polarizability of atoms and molecules. So more the number of electrons, so higher polarizability means polarization higher. So similarly we spread out shapes, higher the dispersion force between the molecules. So London dispersion force, we see it is a weakest force means due to motion of electron means due to idea of momentary dipole. So this force present between inert gas and non-polar molecule. So strength of London force increases with increase in molecular size, molecular mass or number of electrons present in molecule. So next we see a point in London dispersion force. So when two non-polar molecules approaches each other, non-polar molecule approaches each other, attractive and repulsive force between electron and nuclei lead to distortion of size of electron cloud. So this property is referred as polarizability. So ability of another molecule become polar by redistribution of electron. So this is called as polarizability of atoms or molecules.
element. C we consider as inert gas element. So this distribution of electron, this non-polar molecule are shows, means there are a distribution of electron and this is non-polar molecule are, means distribution of electron and other molecule becomes polar. So this inert gas are like due to force of interaction are developed, means there are वीकली फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मीन्स लंडन फोर्स और डिस्पर्शन फोर्स। और ये जो मॉलिक्यूल मतलब ये भी क्या है, नॉन पोलर ही है। ये भी क्या फर्स्ट कौन सा मॉलिक्यूल था, नॉन पोलर, लेकिन इसने इस एलिमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया इलेक्ट्रॉन और ये नॉन पोलर से क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूल बन गया। तो यहाँ पे ये क्या होता है, पोलराइजिबिलिटी प्रॉपर्टी, मतलब एबिलिटी ऑफ अनदर मॉलिक्यूल बिकम पोलर, मतलब ये भी नॉन पोलर और ये भी नॉन पोलर, मतलब इनर्ट गैस तो नॉन पोलर ही होते हैं। तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ पोलर ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज वी कॉल्ड एज पोलराइजिबिलिटी फैक्टर। सो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होगा, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए तो यहाँ पे हायर पोलर निकालेंगे, हायर पोलर मीन्स मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल, how higher the ability becomes 4. So similarly more spread shapes dispersion force between the molecule. तो ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में मतलब दोनों भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल ही ले लिया, नहीं तो दोनों तो इनर्ट गैस तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये वीक फोर्स, मतलब एट इंस्टेंट टाइम के लिए ये प्रोडक्ट मतलब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों इंस्टेंट टाइम के लिए, कुछ ही टाइम मतलब शॉर्ट टाइम के लिए ये डेवलप होता है, शॉर्ट टाइम force is developed due to motion of electron, so at short time a force is developed between non-polar molecule. So first non-polar molecule redistribution of another become a polar molecule, another become a polar molecule. So this is a instant short time force is developed. So this force we call as London force or dispersion force. So next we example consider as n-pentane, means normal जो pentane की chain है. So pentane means 5 carbon atom. So pentane means 5 carbon atom. So we draw a structure like this. So this is 1, 2, 3, 4, 5. And next arrange a hydrogen atom. Next arrange a hydrogen atom like this. So this is a normal pentane chain. So structure like this. And next we draw a neopentane. So this is example of neopentane. So in this n-pentane and neopentane, same molecular formula means C5H12, same molecular formula is same. Molecular formula is C5H12 is present in normal pentane or neopentane, but we see a London dispersion force are stronger in longer chain. London dispersion forces are stronger in a long chain of atom where molecules are not compact. So this can affect the physical property. So for example, it boil at means boiling point of this normal boiling point is 309 degree Celsius. Boiling point is 309 degree Kelvin. 309 Kelvin, and boiling point of neopentane is 282 degree.
boiling point is 282 Kelvin. So this is boiling point of N-pentane and boiling point of neopentane. So which one is larger or long chain? Which one is long chain? So this is N-pentane is long chain. So this is shows a stronger. This shows a stronger London force. Stronger London or dispersion force due to means in this structure molecules are not compact means ये बहुत closely attached नहीं है लेकिन यहाँ पे क्या है एक molecule क्या है ये very closely compact है मतलब एक दूसरे से tightly packed है मतलब यहाँ पे क्या है ये मतलब बहुत क्या हो गई यहाँ पे मैं सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन रह गया था क्लोज कॉम्पैक्ट है और ये क्या है मतलब ये कॉम्पैक्ट नहीं है और ये कहाँ है मतलब यहाँ पे क्या बहुत सारी बोलते हैं ना हम गिचमिड हो गई है यहाँ पे नियोपेंटेन में और यहाँ पे क्या ऐसे मतलब कॉम्पैक्ट नहीं है लूजली पैक कैसे यहाँ पे मतलब इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 138 डायग्राम शो कर दिए थे तो यहाँ पे ये क्या है मतलब ये जो मॉलिक्यूल है लेस कॉम्पैक्ट ये क्या है लेस कॉम्पैक्ट और ये क्या है हाईली कॉम्पैक्ट है so this molecule we write as less compact so this shows that stronger London forces so जो long chain होती है वहाँ पे क्या stronger London force और London force मतलब क्या जो temporary कुछ टाइम के लिए कुछ instant टाइम के लिए force डेवलप होता है तो उससे हम London और dispersion force और van der Waals force तो वो किस में प्रेजेंट होता है तो वो अदर फर्स्ट मॉलिक्यूल O2 CO2 N2 हीलियम मीथेन और अदर इनर्ट गैस तो बिटवीन दिस मॉलिक्यूल मतलब दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं लेकिन एक की वजह से दूसरा पोलर एक्ट करता है कुछ टाइम के लिए तो वो फोर्स जो जनरेट होता है एट शॉर्ट टाइम के लिए ये शॉर्ट टाइम लिव करता है तो उसे ही हम लंडन फोर्स और डिस्पर्शन फोर्स और वो किस पर डिपेंड है पोलराइजेशन तो पोलराइजिलिटी मतलब क्या एबिलिटी ऑफ अनदर मॉलिक्यूल बिकम्स पोलर मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल बिकम पोलर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सो इज नोन एज पोलराइजेशन मतलब पोलराइजिलिटी प्रॉपर्टी सो दिस इज नेक्स्ट वी पॉइंट सी अ हायर polarization means more number of electron so higher becomes polar or next we see a strength of London force increases with increase in molecular size molecular mass and number of electron present in this molecule so this is four type London dispersion force we see in this lecture and last point means London and means sorry dipole and induced dipole force means third type of interaction we also see in this lecture and next lecture we see a hydrogen bond means last type of interaction hydrogen bond so in this lecture we see London dispersion force are very biggest force with in all types of interaction मतलब जितने हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ ली उसमें बिगेस्ट फोर्स कौन सा है ये लंडन और डिस्पर्शन सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस कंसेप्ट क्लियरली इफ यू हैव एनी डाउट और कंफ्यूजन देन आस्क थैंक यू स्टूडेंट